So, once again, a very good afternoon to one and all present here on all the platforms. And I know I can see that today I have kept the topic quite obscure or than a surprise. And I thought, what every time to declare and do it, right? Let us also keep something surprise. And then, because I know that a surprise can turn out to be a pleasant surprise. And let me tell you, आपको ये मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट हम कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है सिर्फ अगर आप अगर आप एंटरप्रेन्योर हो बिजनेसमैन हो तो डेफिनेटली 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट नॉट ओनली दैट अगर आप एक employee who, okay, even if you are an employee, I'm damn sure this topic will help you a lot. Okay, it will help you a lot. Okay, तो आज का जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स या रिक्रूटमेंट रिलेटेड नहीं है आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप को रिलेटेड या फिर हम कहेंगे better would be a life skill which is so important. So friends, let me take one of the books from here. And the topic for today is this. Okay. The topic for today is this. You can read the name Grit. Okay. Before we proceed, ये grit क्या होता है? मैं आपको बता दूं आज एक थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना था कि होता क्या है ना आप सभी के साथ हुआ होगा मेरे साथ भी बहुत हुआ है हम लोग बहुत जगह पे ओवरथिंक करते हैं, राइट? वी ओवरथिंक लाइक एनीथिंग। ओवरथिंक अबाउट जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, ओके? हाँ, या we overthink about the problems that have happened in the past, okay? We overthink about what will happen in the future, the fear for the future, right? हम उसको लेके ओवरथिंक करते हैं, राइट? एंड उस ओवरथिंकिंग की सब चक्कर में पूरी ऊपर ना इधर दिमाग का दही बन जाता है, राइट? देयर इज ऑल खिचड़ी एंड इनसाइड द इनसाइड द ब्रेन एंड देन we are just not able to handle that, right? And it's not about handling, but I'll tell you, इतना सारा टाइम वेस्टेज होता है इस सब में इतना सारा टाइम वेस्टेज होता है जस्ट कांट इमेजिन लोगों के दिन नहीं मुझे कहना चाहिए घंटे नहीं दिन नहीं महीने नहीं सालों सालों बर्बाद हो गए हैं सालों मीन्स आई मीन टू से इयर्स have got wasted in just overthinking and worrying about जो पास्ट में क्या गलतियां हुई है क्या गड़बड़ी हुई है हमारी गलतियां हमारे साथ नाइंसाफी एटसेट्रा एटसेट्रा माय लाइफ माय सिचुएशंस व्हाई विथ मी ओनली एटसेट्रा एटसेट्रा और फियर ऑफ द फ्यूचर अब मेरा क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा मेरी फैमिली का क्या होगा मेरे जॉब का क्या होगा ये ऐसे ही चलेगा तो कैसे होने वाला है एटसेट्रा 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 और ऊपर से अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना फिर तो ऐसे ख्याल बहुत आएंगे दोस्तों गए वो दिन जहाँ माँ-बाप सुबह कहते थे सब बच्चों को सुबह-सुबह ना अखबार पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर लो, you should read the newspaper in the morning. That's a very good habit. I have heard not from 1 or 2 or 3, but I've heard from almost 10, or I can say 1 dozen of mentors, okay, including books, that boss न्यूज़पेपर से थोड़ा दूर रहो, ओके? न्यूज़पेपर से दूर रहो बिकॉज़ इतनी नेगेटिव उसमें ये आती है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ आती है that you feel your brain is feeded with that type of information and then you start becoming a negative type of person, right? And so therefore, so coming back to we have wasted lot of our time, lot of years in overthinking, in worrying, okay, and in many negative emotions, right? सो अगर एक एंटरप्रेन्योर इमेजिन ओके अगर एंटरप्रेन्योर है उसका कुछ कस्टमर के साथ कुछ हो गया कुछ फ्रिक्शन हो गया कुछ आर्गुमेंट हो गया अगर वो अपना
मुंह मुंह लटका के बैठता है, राइट? इफ हिज इमोशन इज अ डाउन इमोशन, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डाउन, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इज अ ह्यूमन बीइंग, ये होने वाला है। बट कितने दिन वो इस इमोशन में, डाउन वाले इमोशन में रहता है, या कितने क्विकली उसमें से बाहर आता है, दैट विल डिसाइड हाउ फास्ट ही गोज इन हिज लाइफ। इमेजिन अगर बॉस का ही आपके, है ना, इमोशन डाउन है, मूड डाउन है, तो क्या आप लोग, अगर आप एम्प्लॉइज हो यहाँ पे, तो क्या आप लोगों के मूड्स अच्छे रहेंगे? नो। एंड देन ही बिकम्स अ मैग्नेट ऑफ नेगेटिविटी, और नेगेटिव चीजें आती है उसकी तरफ, एंड और भी चीजें होती है, एंड देन ही बिकम्स वेरी सेंसिटिव, ही और शी बिकम वेरी सेंसिटिव। छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा, छोटी चीज़ों में गुस्सा, जो आम तौर पे नहीं आता था। दिस इज़ व्हाट हैपेंस विथ अस। एंड finally, because of all this, what happens is, we lose out on our time, not only temper, not only mood, not only time तो जाता ही है, but we lose out on our opportunities, right? उस समय अगर कोई opportunity आई, knock knock, I have a wonderful, opportunity for you, and I want to do business with you. You'll say, sorry, not now. I'm busy now. Call me later. That opportunity can go away. Okay, so you never know आप कितना बड़ा उसमें नुकसान कर रहे हैं. And that is the very reason I thought, this being a very common problem, I thought आज है ना, आप सबको एक solution बता दूं, right? और ये solution इसलिए भी जरूरी था, because it is not only about कि हम लोग के मूड खराब होते हैं, it's also about social media, राइट? ये जो सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं। अभी देखिए, मेरे अगर कुछ दोस्त इसको देख रहे हैं तो कहेंगे, अरे शिल्पा तो रोज ही कुछ ना कुछ करती है, रोज ही लाइव, हर हफ्ते लाइव जाती है, मुझे भी लाइव जाना था पर मुझसे नहीं जाया जाता, शिल्पा क्यों कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? she My friend will go into FOMO, fear of missing out, right? And she will feel, how, why am I not doing it? Okay. And she will go again, her mood will be further down, right? So social media is throwing so many such challenges on us. If we are not in a healthy state of mind, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू सिट ऑन द चेयर एंड हैंडल अ टीम। बहुत डिफिकल्ट है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड रनिंग टू बिजनेसेस, लैब, माइक्रोशूट लैब, मेडिनिकोटस, आई नो इट्स difficult, right? And that's the reason I thought, let me tell you the solution, because I always tell there's a problem, but I always think that problems का postmortem करके करना क्या है, आखिर तो सोचना है सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ ओवर थिंकिंग वाले हैं, ओके, अगर आप ओवर थिंकिंग वाले हैं तो क्या आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख दोगे? कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, यस आई ओवर थिंक, यस आई ओवर थिंक, यस लिख दो, यस लिख दो। डू यू ओवर थिंक? My question is, do you overthink? Wherever, in whichever platform you are, whether you're on Facebook, whether you're on Instagram, whether you're on LinkedIn, whether you're on YouTube, just write yes. Do you overthink? And by the way, it's not very abnormal. It's not very, embarrassing. It's absolutely normal to overthink. It's a human behavior, right? So, yes, I'm waiting for some yes कि आप अगर ओवरथिंक करते हो तो प्लीज राइट यस, सो दैट आई अंडरस्टैंड कितने लोगों को जरूरत है सॉल्यूशन की। अगर नहीं आ रहा है यस तो फाइन, वी कैन कंक्लूड द टॉक हियर, कंक्लूड द लाइव हियर, एंड बाय बाय। Yes, I'm getting a few yeses on some platforms, right? Good. So your yeses are making me understand that you all overthink and you need this solution that is grit. What is grit? दोस्तों, ये ग्रिट क्या है? ओके, ये ग्रिट क्या है? आपने सैंड, रेती देखी होगी ना, मराठी में कहते हैं वाळू, उसको कहते हैं ग्रिट, राइट? उसको कहते हैं ग्रिट, राइट? तो वो कितनी हार्ड होती है, कितना हार्ड है ग्रिट। सो जो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, जिन लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो रहा है, यू नो उनको आज से एक चीज मैं दे रही हूँ, एंड दैट इज ग्रिट। ओके, आई एम गिविंग देम वन वन tip, one tool, one trick to break that overthinking pattern, and that is grit. Okay, grit मतलब जितना हार्ड वो सैंड है, जितना सैंड
जितना जितनी हार्ड वो रहती है, उतना हार्ड हमें अपने आप को बनाना है। ओके, दैट इज व्हाट इज ग्रेट। नाउ फ्रेंड्स, यू से बॉस इमोशंस है, ऐसा नहीं होता, कल ही मेरे साथ ये हुआ, मुझे किसी ने मुंह पे ऐसा बोला, आई फेल्ट सो इंसल्टेड, सो हर्ट। नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आई विल नेवर से यू कि इमोशन अगर है, कोई डाउन इमोशन है, आपको रोने की इच्छा हो रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं आना चाहिए, राइट? वो भी होगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। मैंने आपको पीछे एक सेशन दिया था, गाविया मेडिटेशन, आप ऐसा कुछ करोगे तो धीरे 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 गुस्सा आने का जो परसेंटेज है या बाकी सब चीजें, इमोशंस के कंट्रोल को हम सीख जाएंगे, तो उसको टाइम है। बट इमीडिएट अगर आपको कुछ करना है तो ग्रेट। तो इमोशन अगर अगर लेट्स से आपको किसी कस्टमर ने, किसी पेशेंट ने, ओके, लेट्स से दैट अ पेशेंट, you know, you tried your best for a patient, you're a doctor, you're sitting in your cabin, you tried your best for the patient, but somehow, you know, the patient you could not save, you could not save the patient, and now the patient's relatives come to you and are started, you know, having arguments with you. ओके, यू विल फील सो बैड इनसाइड, यार कितना ट्राई किया, दिन रात बैठा हूँ पेशेंट के साथ, इतना पढ़ा है, मैंने कुछ रेफर भी किया, मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी कॉल किया, वी डिड एवरीथिंग, यू नो, एक दो दवाइयाँ तो यहाँ वहाँ से मंगाई, एंड कुछ दवाइयाँ तो हमने पेशेंट के रिलेटिव से भी नहीं मंगाई, अपनी जेब से डाली, स्टिल यार दे डोंट अंडरस्टैंड। यू विल फील बैड अबाउट इट, राइट? यू विल फील वेरी बैड अबाउट इट, और फीलिंग बैड इज ओके, दैट इज नॉर्मल। But being in that bad emotion and that sad emotion for time, for a lot of time, and in the meanwhile और कुछ हो गया, in the meanwhile और कुछ हो गया, तो वो जो इमोशन है ना, नीचे 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 जाएगा, that is wrong. So what is important is how quickly you come out of that emotion and bounce back, and it's okay यार, it's okay, चलता है, right? होते रहता है। If I were there in their place, मेरे साथ भी शायद ऐसा होता, मैं नहीं समझ पाता, या मैंने यहाँ पे क्या किया है उनको कैसे पता, राइट? एंड व्हाटएवर, लाइक अपना जो सेल्फ काउंसलिंग करना है वो अपने तरीके से कीजिए, एंड जस्ट से यार, आई एम अ ग्रिटी पर्सन, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सो ग्रिट हियर व्हेन आई एम यूजिंग टुडे, आई पर्टिकुलरली मीन इमोशनली बीइंग स्ट्रॉन्ग। तो जो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं या अपने आप को करते हैं, लेट मी टेल यू, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट, यू नो, इनहेरिटेड, मतलब बाय बर्थ इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, राइट? आई हैव सीन सम पीपल, बट कुछ लोगों को अक्वायर ये करना पड़ता है। इस ये जो क्वालिटी है, ये हम बाद में अपने आप में ला सकते हैं। आई हैव रियली डन दैट ऑन मी इन द लास्ट 1 ईयर। हम इसको बाद में भी ला सकते हैं, अपने आप को हम बाद में ग्रिटी बना सकते हैं। सो you know, so bring the quality, bring the characteristic of being in grit, being emotionally strong. So down emotion को झट से ऊपर लाना है, कुछ भी करके as early as possible उसमें से ऊपर आना है, and become normal. It's okay for me, right? You just have to say it's completely okay for me. So that is what is great, right? Let me tell you ये क्यों करना है, because there are two things. Number one, being doctors or being any person, right? Being even a non-doctor, non-medical, अगर आपका mood, temperament, you know, नीचे है, you know, it is on the lower side, negative आपको लग रहा है, तो आपका जो है ना, लेफ्ट साइड का लॉजिकल ब्रेन है ना, वो काम नहीं करता। यू मस्ट हैव सीन दैट। आपको लॉजिकली कुछ थिंक करना था कि इसके बाद ये करना, बट यू आर सैड, you just can't think, the brain can't think, the left side of the brain can't think. Now let me tell you, don't be happy जब मैं कह रही हूँ अरे लेफ्ट साइड, अरे ठीक है, राइट साइड ब्रेन वर्क कर रहा है, राइट साइड इज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, thinking something out of the box, even that doesn't work. So your left and right hemispheres of the brain, the logical and the creative side don't work. And now imagine, अगर आप नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट देख रहे हो, will you be able to apply that logic जो आपने मेडिसिन फील्ड में पढ़ा था, क्या आप अप्लाई कर पाओगे? नो, इम्पॉसिबल। अच्छा, कुछ डिफिकल्ट केस है, आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, आपको कुछ 2-3 थ्योरीज मर्ज करके अपनी ट्रीटमेंट इस तरह देनी है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। You think the right side of the brain is going to work, your creative brain also is not going to work, and therefore it's so important to keep yourself mentally stable, right? I'm not even talking happy. Happy is best,
but at least be stable. अपना heart rate, pulse rate 72 तो रखो. Okay, 72 तो रखो. That's very important, right? Hence, you have to understand grit is important. Let me tell you, friends, in this book, what is there? इतनी बढ़िया, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. I'll tell you. ये जो ऑथर है ना, एंजेला डकवर्थ, ओके, वो ऐसे कि there were two sisters. There were two sisters. So one sister, the not Angela, Angela's sister was an intelligent girl, right? She was an intelligent girl. She used to study very hard, and she was her IQ was very good. So कभी भी क्लास में उसके अव्वल नंबर आएंगे, जहाँ जाएगी वो टॉप करेगी, ये होता था. और जो दूसरी है, मतलब एंजेला डकवर्थ, जो ये ऑथर है, जो उसका आईक्यू इतना खास नहीं था. ओके, इसका आईक्यू खास नहीं था, तो इसका क्लास में कभी टॉप वॉप नहीं करती थी. तो होता था ऐसे कि द फादर ऑलवेज यूज्ड टू स्कोल्ड एंजेला कि देखो तुम्हारी बहन को कितना अच्छा पढ़ाई करती है, कितना अच्छा नंबर लाती है, व्हाट अबाउट यू, तो कंपैरिजन होता था. तो शी यूज्ड टू से ओनली वन थिंग, डैडी अभी तो ठीक है, स्कूल कॉलेज लेवल तक ठीक है, आप बाद में देखना कौन आगे रहेगा. पता नहीं कहाँ से उसको वो सूझा. एंड शी सेड दिस, यू नो व्हाई, बिकॉज शी हैड समथिंग व्हिच द sister didn't have. Angela had something which the sister didn't have, and that was she had grit. Okay, वो emotionally strong बंदी थी. Angela, the author, was emotionally strong. The sister was not. तो पता नहीं कहीं से उसको लगा कि लाइफ में आगे तो मैं ही जाऊंगी, right? And you know what happened after a few years? Actually, this happened. The sister, though she used to top everywhere when it was academics, you know, but later when actually being in the life, whether it is relationships or career, the finance, Angela was much ahead of her and she stayed behind. Though her talent, her IQ was high, sister's talent and IQ was high, and the talent and IQ of Angela was low. But just because Angela was gritty and she was not, the sister was not gritty, you know, Angela moved ahead in life. And then Angela also started thinking, yeah, ऐसा क्यों होता है? Finally, she took psychology, and psychology में she started doing research on this, and she has given multiple chapters जिसमें उसने बहुत सारे ग्रुप्स को स्टडी किया है यूनिवर्सिटी में कि अ, एक बहुत टैलेंटेड ग्रुप है, जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ बच्चों का ग्रुप है, जिसमें से बहुत एक स्क्रीनिंग सिस्टम में से कोई एंट्रेंस एग्जाम में से सब पास हुए थे, उसमें से कुछ ही लोग आगे जाते हैं. आर्मी स्कूल है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट आर्मी स्कूल है यूएस की, तो कुछ ही लोग आगे जाते हैं, जबकि उसमें पास होना इतना, इतने कंपटीशन में से इतने ही बच्चे पास होते हैं, उसमें से आगे नेक्स्ट ईयर जाने वाले लोग बहुत कम है, बहुत सारे छूट जाते हैं. व्हाई? शी स्टडीड. यार ये तो सब टाइम टेस्टेड एंट्रेंस एग्जाम में से आए हुए, विल पावर भी स्ट्रांग थी, इसीलिए तो पास हुए. विल पावर against grit. And then she saw, oh, the people who went ahead were gritty, were emotionally strong, and the people who left out, their willpower was good, but still willpower did not help. Grit ही उनको help कर दिया. Okay, so that was about that is one. Then later she did that with the talent. कि जो talented लोग हैं उनमें भी देखा कि कौन आगे जा रहा है. तो टैलेंट के कंपैरिजन में ग्रिट वाले लोग ज्यादा आगे चले गए. थोड़ा सा टैलेंट कम भी था, फिर भी वो आगे चले गए. So she has told about this, in her book. It's a wonderful book, Grit नाम से. आप पढ़ेंगे और बाद में ग्रिट को कैसे अपनाना है ये भी तरीके उसमें है. अगर नहीं बता दूंगी तो एंजेला मैम कहेंगी व्हाट आर यू डूइंग शिल्पा, मेरी बुक कौन पढ़ेगा. सो प्लीज बाय द बुक. बट ओवरऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट आज के लिए इतना समझ लो कि ग्रिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इन लाइफ. एंड सो जस्ट वर्क ऑन इट whenever you feel emotionally down. बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, डर है, और या सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंगर है, जेलसी है, ये सब जो चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप है, यू फील डाउन, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ and make yourself okay as early as possible. You can use your secret shifters, right? Secret book में जो secret shifters है, like कोई गाना सुन के अच्छा लगता है, किसी से बात करके अच्छा लगता है, पेट से बात करके अच्छा लगता है, मूवी देख लो नॉर्मल हो जाती है, वो सब सीक्रेट शिफ्टर्स यूज कर लो, राइट? और देन स्पीक टू द पर्सन, रिजॉल्व आउट ऑफ कम्युनिकेशन. चल यार बात करते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड यू एंड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट.
कुछ करो, but come out of it as early as possible and start becoming emotionally strong. Okay, so this is one more reason. I said there are two reasons why doctors should do this. Number one, they have to work, their logical and creative brains have to work, and which needs a stable mindset, a happy or at least a stable mindset. And second reason, there's something called as energy meter. एक एनर्जी मीटर होता है, ओके, ऐसे फनल की तरह होता है। हमारी जो एनर्जी है, जैसे स्पीडोमीटर है, राइट, स्पीडोमीटर होता है, वो हमें बताता है क्या स्पीड चल रही है, कितना किलोमीटर आप गए हैं। उसी प्रकार से एनर्जी मीटर होता है। हमारे एनर्जी का एक मेट्रिक सिस्टम है। सो यू नो व्हाट लोएस्ट ऑन दिस इज, हमारी एनर्जी लोएस्ट कब होती है, कौन से इमोशन में? गिल्ट। उससे भी उसी की तरह बाकी कौन से लो इमोशंस है? एंगर, depression, jealousy. Okay, these are the low energy emotions. इन emotions में आप अगर आप किसी से jealous हो रहे हो, your emotion, your energy is going to be down. And at the same time फिर आपका emotion higher, energy higher level पे कब है? Acceptance. ठीक है, जैसा है सब ठीक है, I'm okay about it, acceptance. Then joy, you know, the joy, love. Love has got very, very high energy, right? And I again and again tell everyone, I will tell you here also, whenever I train my team, I tell, जब हम love इस word का use करते हैं, तो many times, you know, we feel embarrassed. I see people feeling embarrassed because love is many times considered synonymous to romance. But romance is one aspect of love. Otherwise, love is a very big term. Love is such important and such what we can say significant that you know we should have love not only for our near and dear ones, but we should have for our team members, for even strangers, for our customers, for our patients. That is what is the ideal state of mind that we should be in. और अगर उस state of mind में अगर है, our energy is going to be very high. And when the energy is high, you know, you as a doctor give the best treatment to your patients, right? Because I told you your logical and creative brains are working. You give the best treatment. Not only that, your communication, your counseling becomes such wonderful that patient says, तो साहब सिर्फ आपकी आपसे बात ही कर लो ना, वहीं पे मुझे ठीक लगने लगता है. You know, they feel so wonderful. If you want that to happen, use grit. Okay. And today, for people who are live today with me, Preeti Nalambar ma'am, Tushar Nikam, Dr. Deepak Lohia, for Jagdish Babu, and I have seen Tasani and Dr. Rajesh and all of you there. Okay, I have a small gift for you. Okay, I have a small gift for you, for all of you who stayed here. Okay, I will share you the picture of an energy meter. एक एनर्जी मीटर का जो फनल है उसका मैं पिक्चर आपको शेयर करूंगी. यू जस्ट हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू राइट इन द कमेंट एनर्जी मीटर, राइट? यू नो यू कैन राइट आई वांट एनर्जी मीटर, या आप सिर्फ एनर्जी मीटर लिख दो, हम आपको किसी तरीके से उसको पहुंचा देंगे, राइट? हम किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपके डीएम में, आप अगर मेरे पहचान के हो आपके व्हाट्सएप पे एनर्जी मीटर आ जाएगा. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एनर्जी मीटर इतना इंपॉर्टेंट है. आई हैव शोन दिस टू माय सन, टू माय डॉटर. गिल्ट में रहोगी ना, तुम्हारी एनर्जी बहुत लो रहेगी. अंडरस्टैंड, दिस इज अ साइंस. डोंट बी इन गिल्ट. अगर कुछ मिस्टेक हुई है पास्ट में, ड्रॉप इट एनी हाउ, बिकॉज एनर्जी लो रहने वाली है. एंगर है, एनर्जी लो रहेगी. Okay, and you know, so this is how. Okay, I have started getting request. Dr. Niranjan Reddy saying energy meter. Yes, you will get it in your inbox, right? So with this, let me conclude and let me have a summary for people who joined late and people who were there since the beginning. तो उनके लिए तो बस फीस्ट ही है कि आज का टॉपिक ऐसा है कि हम लोग आजकल बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. We as human beings do a lot of overthinking about the mistakes, about the past में जो मिस्टेक्स हुए हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफी हुई है, कुछ सैड मेमोरीज है, कुछ बैड मेमोरीज है, you know. So we many times, you know, travel in those past negative zones, or we travel in the future insecurities or fears, you know, or worries, right, or stress.
तो अगर हम आइदर फ्यूचर के नेगेटिव ज़ोन में हैं या पास्ट के नेगेटिव ज़ोन में हैं, है ना? एंड बीइंग अ डॉक्टर ये बहुत रिस्की है। नॉट ओनली दैट, अगर सामने कुछ आया है, राइट? अगर सामने से कुछ पेशेंट आया और आपसे कुछ हुआ है आपके साथ और आपका मूड अगर खराब है, तो इट डज़न्ट सर्व द पर्पस फॉर यू टू बी अ गुड डॉक्टर फॉर द नेक्स्ट पेशेंट्स, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट सोशल मीडिया इज़ पुटिंग ऑन सो मेनी थिंग्स ऑन अस कि हमारा मूड कई बार ऊपर नीचे आजकल हो रहा है, राइट? एंड व्हिच इज़ वेरी डेट्रिमेंटल फॉर अ गुड डॉक्टर। इसीलिए इसमें से बाहर कैसे आए? इमोशंस को तो हम कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, वो भी कर सकते हैं पर इतना आसान नहीं है। बट व्हाट कैन बी इमीडिएटली डन इज, इमोशन जैसे ही डाउन हो गया, द एनर्जी नीचे हो गई है, यू हैव टू यूज ग्रिट, व्हिच मीन्स बिकम इमोशनली स्ट्रांग। यू हैव टू काउंसिल योरसेल्फ, इसमें से जल्दी बाहर आना है। यू कैन यूज सीक्रेट शिफ्टर्स लाइक, अपना सीक्रेट शिफ्टर मतलब हम किस चीज से हमारा मूड अच्छा होता है, कोई सॉन्ग है, कोई बुक है, कोई पर्सन है, कोई मूवी, कुछ भी हो, ओके? या एक ड्राइव पे चले गए, व्हाट इज योर सीक्रेट शिफ्टर, डू दैट, बट यूज दैट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड कम आउट ऑफ दैट इमोशन, बिकॉज grit is important for you to be mentally stable and then happy, and not only happy and stable but productive in life. And why? Because there's also an energy meter, जिसमें there's a नीचे वाले फनल में पूरे लो एनर्जी किस इमोशन में आते हैं, और ऊपर जो है फनल में हाई एनर्जी हम किस मोमेंट्स किस इमोशन में आते हैं। ये अगर हमको नॉलेज मिल गया तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि उप्स दिस इज जेलसी, इसमें तो एनर्जी मेरी 50 रहेगी, मुझे अभी 200 पे एनर्जी लेके जानी है। लेट मी डू समथिंग लाइक एक्सेप्टेंस, लेट मी डू समथिंग लाइक जॉय। Okay, so you will be able to manage your energies if you know this energy meter. So with this, friends, I hope you all will next time जब मैं हम मिलेंगे तो you will have many incidences where you say we we came out of the negative emotion like this, चुटकी से चुटकी बजा के हम बाहर आ गए। Okay, we have started becoming gritty, we have started working on our emotional strength, right? And with this I end today's session. uh, have you wish you a great week ahead and a great day today. Bye bye.